Good morning students, my name is Itish Jitwani. Today we are going to learn modals, which is also known as auxiliary or helping verbs. So before we start this video, I request you please subscribe my channel and press the bell icon. So whenever I upload a new video, you will get notified. So let us start. Let's see what kind of modals we have. So here is the list: can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will and would. These are the helping verbs. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentences. Now these are also known as helping verbs. So verb का मतलब क्या होता है? An action, क्रिया. So the word which helps the verb, that is known as helping verb, and it provides a specific meaning to the sentence. Let's move ahead. So what is the correct formation of modals? The proper formation of modals is the sentence always begins with subject, helping verb, verb, object and other words. This is the proper formula of using modals in a correct way. Let's move ahead. So modals are divided into three different parts. In this video we are going to see single concept of modals and double concept of modals. The list are: single concept of modals are will, might, should, ought to and had better. We have already learned had better. Double concept modals: may, must, would, shall, could and can. Modals in past we are going to see in the next video. Single concept of modals. So will, let us start with will concept is future. For an example, Joe will travel to New York next week. Joe जो है वो न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक में जाएगा. आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूँगा. सो दैट इज हेल्पिंग वर्ब. might, small probability. Probability stands for the संभावना. आई माइट मूव टू कैनेडा समडे. सो इसका मतलब क्या हो गया? शायद मैं एक दिन कनाडा चला जाऊंगा हमेशा के लिए. माइट, आई एम गिविंग यू मोर सेंटेंस. आई माइट बाय अ न्यू फोन, मैं शायद न्यू फोन खरीदूंगा. ओके, नेक्स्ट शुड. शुड इट्स काइंड ऑफ रिकमेंडेशन whenever we give advice to someone. Should and ought to both are almost same. So let us read the example. You should go to the doctor. तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स. तुम्हें ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो, उससे ब्रेक वायलेशन नहीं करना चाहिए. ought to, फॉर्मल रिकमेंडेशन. वी ought to know about our first aids. हमें हमारी सावधानी के बारे में पता होना चाहिए. यू ought to रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. तुम्हें हमारे पेरेंट्स की, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. had better, it's kind of warning which we have already learned in the previous video. had better, I had better study or I will fail the test. मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा. you had better cook the food. तुम्हें खाना बनाना चाहिए. Double concept of modals. Okay, let us start with may. The first meaning of may is permission. Whenever we ask permission from someone, we can use may I come in. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Here there is no meaning of kind of probability. Second may, good probability. We may visit Mexico this summer. हमें इस समर में मैक्सिको में जाना चाहिए. Where there is a strong probability. Okay, must. First, let's see. Responsibility. Everyone must pay the taxes. हर इंसान को टैक्सेस पे करने चाहिए. That is your kind of responsibility. You must follow the traffic rules. तुम्हें traffic rules follow करनी चाहिए. Must. Second, assumption. She didn't arrive. She must be sick. Whenever we do any kind of assumption, जब हम किसी भी तरह की धारणा कर देते हैं, so we can use must. शी डिडंट अराइव, शी मस्ट बी सिक. वो आई नहीं है, शायद वो बीमार होगी. ही इज़ नॉट प्रेजेंट, ही मस्ट बी एट होम. वह प्रेजेंट नहीं है तो शायद वह अपने घर होगा या होगी. वुड. फर्स्ट, पास. वी यूज वुड एज अ पास्ट ऑफ विल. व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले सॉकर. जब मैं यंग था तब मैं सॉकर खेलता था. When I was a child,
आई वुड प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. जब मैं छोटा बच्चा था तब क्रिकेट ग्राउंड में खेला करता था. वुड सेकेंड प्रेजेंट अनरियल. आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट. when anything is there which is not real, for an example, I would buy the car but I can't afford it. मैं कार खरीदूंगा बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता. सो दैट इज अनरियल कंसेप्ट ऑफ सेंटेंस. Double concept of modals. Shall, educated expression of excuse me, I shall go now. Shall I clean it? Shall, it's a proper formal way for the will. Excuse me, I shall go now. मुझे अब जाना चाहिए. Shall I clean it? क्या मैं ये clean कर दूँ? Shall, second, contractual obligation. The company shall pay on January 1st. So when there is any contract is made with anyone, so at that time we can use shall. The company shall pay on January 1st. कंपनी को 1st Jan को पे करना ही पड़ेगा. Could first. Unreal ability. Could is also past of can. I could go if I had a time. मैं जा सकता था बट अगर मेरे पास टाइम होता. Could second past ability. She could play the piano. वो अच्छे से पियानो बजा मीन्स प्ले कर सकी. आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल फॉर कुड. आई कुड बाय एन एक्सपेंसिव कार. मैं एक्सपेंसिव कार खरीद सका. ओके. द कैन फर्स्ट प्रेजेंट एबिलिटी. व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क वी कैन स्पीक इंग्लिश. हम इंग्लिश में बोल सकते हैं. वी कैन गेट गुड मार्क्स. हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. कैन इज ऑल्सो यूज टू टेक परमिशन. कैन आई हैव अ कैंडी. क्या मैं ये कैंडी ले सकता हूँ. कैन आई गेट योर नंबर. क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है. सो इन दिस वे we can learn helping verbs modals. This sentences will help you to learn more. Answers are already I have ticked on it. Please go through it. Please subscribe my channel and keep watching. Do practice at your home. Thank you and have a nice day. Bye bye.